Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read chapter number 6, that is arrangement of business and list of business. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं. That is on days allotted to the transaction of government business. कोई भी जो जो दिन है जहाँ पर जो है अलॉट किया जाता है कि हाँ आज जो है यहाँ पर ये काम होगा, ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस. सच बिजनेस shall have precedence and the secretary general shall arrange that business in such order as the speaker may, after consultation with the leader of the speaker, determine. देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं. हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस. की जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा पार्लियामेंट में अंदर. ठीक है, वहाँ पे बात हो रही है. तो द ऑन डेज अलॉटेड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, जब भी गवर्नमेंट बिजनेस के लिए कोई भी डे अलॉट किया गया तो सच बिजनेस शैल हैव प्रेसिडेंस. उन उस बिजनेस की क्या होगा, किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट बिजनेस की बात हो रही है. ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस की बात हो रही है. तो जब भी कोई गवर्नमेंट बिजनेस की बात होगी, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब वो कह रहे हैं कि जब भी आपको ऑन डेज अलॉटेड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, जब भी गवर्नमेंट बिजनेस की ट्रांजैक्शन की बात आती है, ठीक है, तो इनको दिन स्पेसिफिकली अलॉट किया गया. ठीक है, सच बिजनेस शैल हैव प्रेसिडेंस, मतलब उन वो जो बिजनेस होंगे उनकी क्या होगी? उनकी प्रेसिडेंस होगी. ठीक है, सच बिजनेस शैल हैव प्रेसिडेंस, मतलब उनको पहले एक तरीके से लिया जाएगा, प्रेसिडेंस होगी उनकी. ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब यही यही समझ पा रहे हैं ना हम. प्रेसिडेंस मतलब किसी चीज को पहले लेना. पर देख लेते हैं प्रीसिडेंस. प्रेसिडेंस का मतलब द राइट दैट समबडी समथिंग हैज टू कम बिफोर, राइट. ठीक है, तो यस उनकी प्रेसिडेंस होगी. एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल अरेंज दैट बिजनेस इन सच ऑर्डर एज द स्पीकर मे, आफ्टर कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस, डिटरमाइन. तो और जो है सेक्रेटरी जनरल उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे, उस वहाँ के वर्क को सेक्रेटरी जनरल जो है इस तरीके से वहाँ से अरेंज करेंगे दैट बिजनेस. ठीक है, एज द स्पीकर मे, आफ्टर कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द स्पीकर, डिटरमाइन. जैसे जैसे वो बताएंगे उस तरीके से आपको उसको कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं इसके अंदर, प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी वेरीड on the day that business is set down for disposal unless the speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation. प्रोवाइड मतलब बोलते हैं एक्सेप्ट जो है दैट सच ऑर्डर ऑफ बिजनेस, वो जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस है जो कि सेक्रेटरी जनरल ने बनाया है ऑन द ऑर्डर ऑफ द स्पीकर. ठीक है, इन और जो कि स्पीकर ने भी इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस बनाया है, वो जो ऑर्डर है ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी वेरीड, मतलब वो वेरी नहीं करना चाहिए ऑन द डे, उस दिन, दैट बिजनेस इज सेट डाउन फॉर डिस्पोजल, ऑन द डे दैट बिजनेस इज सेट डाउन, जो कि जो बिजनेस जो है सेट डाउन फॉर डिस्पोजल के लिए गया है, अनलेस द स्पीकर इज सेटिस्फाइड, जब तक कि स्पीकर सेटिस्फाइड ना हो दैट देयर इज ग्राउंड फॉर सच वेरिएशन, कि उस वेरिएशन के लिए जो है सफिशिएंट जो ग्राउंड है. ठीक है, मतलब कि जो है अगर स्पीकर को लगता है कि उस जैसे जो भी उन्होंने जैसे क्या हुआ, जो भी स्पीकर है, स्पीकर ऑफ द हाउस, राइट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसल्ट विद कंसल्टेशन ऑफ दिस, जो जो लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर, या फिर जो भी इनको नॉमिनेट करते हैं वो होते हैं लीडर ऑफ द हाउस. तो और वो मेंबर होने चाहिए. ठीक है, तो लीडर ऑफ द हाउस जो है, जब उन्होंने आफ्टर कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस इन्होंने डिटरमाइन कर लिया, बट सच ऑर्डर ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी वैलिड, वो नहीं होना चाहिए ऑन द डे दैट बिजनेस इज सेट डाउन फॉर डिस्पोजल, मतलब जिस दिन के लिए वो सेट डाउन किया गया है बिजनेस, उससे वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, नो चेंज अनलेस, ठीक है, अनलेस द स्पीकर, मतलब यहां से आप कह सकते हैं एक तरीके से नो चेंज, नो चेंज इन द बिजनेस unless the speaker is satisfied that there is sufficient reason, unless the speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation. अगर है तो फिर आप वो कर सकते हैं. द लास्ट टू टॉपिक पे, टॉपिक है आपका अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस. देखिए, जब हमारे गवर्नमेंट बिजनेस की बात हो रही है तो अब यहाँ पर बात आता है कि अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए हम कितना टाइम दे सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं भी, कितना टाइम दे सकते हैं इसके बारे में. तो कहते हैं यहाँ पर द लास्ट टू, बोलता है the last 2.5 hours of a sitting on Friday shall be allotted for the transaction of a private member's business. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए कि प्राइवेट मेंबर का जो वो जो बिजनेस है वो लास्ट 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे दिए जाते हैं इसके. कितने? 2.5 आवर्स दिए जाते हैं. ठीक है, और वो भी कब? ऑन ऑन फ्राइडे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए वो क्या कह रहे हैं, द लास्ट, और वो भी लास्ट वाले, लास्ट 2.5 hours of sitting on Friday shall be allowed for the transaction of private members business, provided that speaker may allot different Fridays for the disposal of different classes of such business
and on Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, मतलब इसके बोलता है कि स्पीकर जो है अपने अगर चाहे तो वो अलॉट कर सकते हैं डिफरेंट फ्राइडेज भी फॉर द डिस्पोजल ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सच बिजनेस, मतलब ऐसे ही बिजनेस को अलग अलग फ्राइडेज वो है दे सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन फ्राइडेज सो अलॉटेड फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑफ दैट क्लास शैल हैव प्रेसिडेंस। ओके, देखिए वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट जो स्पीकर है मे अलॉट डिफरेंट फ्राइडेज, ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पीकर हैं वो अलग अलग फ्राइडेज आपको दे सकते हैं, ठीक है, फॉर द डिस्पोजल ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सच बिजनेस, अलग अलग क्लासेस का, मान लीजिए प्राइवेट मेंबर बिल है ना जैसे, तो कोई अलग है कोई अलग है, तो उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्राइडेज में बांट दिया उन्होंने। एंड ऑन फ्राइडेज सो अलॉटेड, और वो जो फ्राइडेज जो होंगे ना, एंड ऑन फ्राइडे सो अलॉटेड फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिजनेस, किसी भी क्लास ऑफ बिजनेस से बिजनेस ऑफ दैट क्लास शैल हैव प्रेसिडेंस, इनका प्रेसिडेंस होगा, बिजनेस ऑफ दैट क्लास शैल हैव प्रेसिडेंस, मतलब इनका जो है प्रीसीड करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले तो लास्ट 2.5 आवर्स दे दिए उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस करने के लिए फ्राइडे के लिए, और वो जो है अलग अलग फ्राइडे में अलग अलग काम दे सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड दैट स्पीकर जो है मेल डिफरेंट फ्राइडेज फॉर द डिस्पोजल ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सच बिजनेस, तो मतलब क्लासेस ऑफ सच बिजनेस मतलब कि सच जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं, एंड ऑन फ्राइडे सो अलॉट, और ये जो फ्राइडे जो है जो ये अलॉट किए गए हैं इसमें क्या होगा, फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑफ दैट क्लास शैल हैव प्रेसिडेंस, उनकी उनकी जो है उनको प्रेसिडेंस दी जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्पीकर मे इन कंसर्न विद द लीडर ऑफ द हाउस अलॉट एनी डे अदर देन अ फ्राइडे फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल, और इसके अलावा भी कहते हैं द स्पीकर जो है ना इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, अलॉट कर सकते हैं एनी अदर डे, एनी अदर डे भी, एनी अदर डे अदर देन अ फ्राइडे, ठीक है, अदर देन अ फ्राइडे भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ देयर इज नो सिटिंग ऑफ द हाउस ऑन फ्राइडे द स्पीकर मेड एट द 2.5 आवर्स ऑफ एनी अदर डे इन द वीक में बी अलाउड टू प्राइवेट मेंबर, अगर मान लीजिए जो फ्राइडे है देयर इज नो सिटिंग ऑन ऑफ द हाउस ऑन फ्राइडे, कहीं भी फ्राइडे को नहीं है, तो क्या करेंगे, स्पीकर जो है अपनी तरफ से डायरेक्ट कर देंगे 2.5 आवर्स ऑन एनी अदर डे इन द वीक विच में बी अलॉटेड टू फॉर प्राइवेट मेंबर बिजनेस, उनके लिए अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड है आपका प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स, किस तरीके से प्रेसिडेंस होगी प्राइवेट मेंबर बिल्स, ठीक है। ऑन अ डे अलॉटेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स such bills shall have relatively precedence in the following order, namely bills in respect of which the motion is that leave to be granted to introduce the bill, क्या प्रेसिडेंस ऑफ, अब ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 2.5 आवर्स दिया, अब उसके अंदर आपके पास 10 प्राइवेट मेंबर बिल आ गए मान लीजिए, तो उनको भी प्रेसिडेंस कैसे होगी, मतलब किस तरीके से सेट किया जाएगा। सो ऑन अ डे allotted for the disposal of private members bill such bill shall have relative precedence in the following orders, on a day allotted for the disposal of private member bills such bill shall have relative precedence in the following order, namely सबसे पहले क्या होगा, बिल्स, इसमें प्रेसिडेंस की हम बात कर रहे हैं कि किसके पास जो है प्रेसिडेंस होगी, उसके उसके बारे में बता रहे हैं आपका, प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। तो कहता है बिल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मोशन इन दैट दैट लीव टू बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल, ठीक है, कोई भी एक मोशन है दैट इसमें जिसमें परमिशन मांगे टू ग्रांट इंट्रोड्यूस द बिल, इंट्रोड्यूस द बिल, ठीक है। बिल्स रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट विद मैसेज अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्स अगर कोई रिटर्न कर दिया जो है बाय द प्रेसिडेंट विद मैसेज अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्स व्हिच हैव बीन पास्ड बाय द हाउस रिटर्न बाय द काउंसिल, जो है पास जो बिल्स हैं आर पास बाय द हाउस बट रिटर्न बाय काउंसिल, तो इनकी प्रेसिडेंस होगी। बिल्स व्हिच हैव बीन पास्ड बाय काउंसिल बट एंड ट्रांसमिटेड टू द हाउस, bills in respect of which a motion has been carried, एक motion has been carried that will be taken into consideration, okay, bill in respect of which the report of a joint or select committee has been presented, अंदर report of a joint or select committee जो दे रखी है आपका, bills which have been circulated for the purpose of eliciting opinion, जो भी circulate किए गए for the purpose of eliciting opinion, bills introduced in respect of which no further motion has been carried, bills introduced in respect of no further motion has been made or carried, and other bills, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं, प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्रेसिडेंस मतलब प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स बोलते हैं ऑन अ डे अलॉटेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स, ठीक है, सच बिल्स
shall have relative precedence in the following order. मतलब सबसे टॉप प्रायोरिटी रहेगा मोशन, अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल में कुछ और तो अलाउड ही नहीं है ना। और अगर आप चाहें वेरी तो कर सकते ही नहीं प्राइवेट मेंबर बिल में, तो प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर जो प्रेसिडेंस है, मतलब किस किस तरीके से जो इनको वो कौन पहले आएगा, ठीक है, तो उसके उसके लिए बता रहे हैं आपका। तो क्या करते हैं आपका, बिल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द मोशन इज दैट, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बिल है कि कह रहा है कि भाई ग्रांट मे बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल, कोई नया बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिल रिटर्न कर दिया बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने कोई बिल रिटर्न कर दिया विद अ मैसेज, ठीक है, अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया, assent to bills when a bill has been passed by the House of Parliament, it shall be the bill only, and if the bill is passed again by the Houses with or without an amendment presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom. ठीक है, provisions related to assent to bills by the President when a bill passed by the, मतलब when a bill has been passed by the House of Parliament, it shall be presented to the President. The President shall declare either he assents to the bill or he withholds the assents therefrom as soon as possible. Yeah. Within May as soon as possible after the presentation to him of a bill, assent, return the bill. It is not a money bill to the House with a message requesting that they may reconsider. ठीक है, यहाँ पर जो ये रिक्वेस्ट दिया ना मैसेज, तो इनकी इन इन बिल्स की जो है ना प्रेसिडेंस रहेगी, मतलब ठीक है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि रिटर्न कर दिया है प्रेसिडेंट ने, ठीक है, रिकन्सिडरेशन बिल्स विच हैव बीन पास्ड बाय द हाउस एंड रिटर्न बाय द काउंसिल, ठीक है, जो कि जो बिल है जो कि हाउस ने पास कर दिया, रिटर्न बाय द काउंसिल, बिल्स विच हैव बीन पास्ड बाय द काउंसिल एंड ट्रांसमिटेड टू द हाउस, जो कि काउंसिल ने पास कर दिया और फिर हाउस को ट्रांसमिट कर दिया गया है। बिल्स इन विच मोशन हैज़ बीन कैरिड, जिसमें मोशन चल गया, कोई रिपोर्ट ऑफ अ जॉइंट और सेलेक्ट कमेटी हैज़ बीन प्रेजेंटेड, ठीक है, किसी भी रिस्पेक्ट बिल्स विच हैव बीन सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस इलिसिटिंग ओपिनियन, नो फर्दर मोशन हैज़ बीन कैरिड प्रेजेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो फर्दर मोशन हैज़ बीन कैरिड, ठीक है, एंड और या फिर अदर बिल्स, द रिलेटिव प्रेसिडेंस ऑफ बिल्स फॉलिंग अंडर द सेम क्लॉज ऑफ सेवरल वन शैल बी डिटरमाइंड बाय बैलेट, ठीक है, इसको ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया, बिल फॉलिंग अंडर वन दिस shall be जो है it shall be determined by ballot के थ्रू होगा, to be held in accordance with the orders made by the speaker and on such day and in such manner as the speaker may direct, provided that motion in respect of bills falling under clause A of several one shall be entered in the list of business in the order in which notice of such a motion have been received in the point of time। तो ठीक है, यहाँ पर जब सब रूल वन की इस क्लोज ए की बात कर रहा है, यहाँ पर shall be entered in the list of business in the order in which नोटिस ऑफ सच मोशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, ठीक है, यहाँ पर आप ये जो न्यू बिल की बात कर रहे हैं, मोशन इंट्रोड्यूस द बिल, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मोशन टू इंट्रोड्यूस द बिल की बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आप जो है किस किस डेट के एंटर्ड इन द बिजनेस, नोटिस आपने किस दिन दिया था, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रोवाइड फर्दर दैट बिल्स फॉलिंग अंडर क्लोज एच, एच बिल्स इन रिस्पेक्ट कोई भी मोशन नहीं हो पाया, ठीक है, H1H which are classified by the committee or private member bills under resolution are category A shall have precedence, okay, तो अगर bills introduced in respect of which no further motion has been carried,
हैज बीन मेड और कैरिड, ठीक है। तो बोलता है द बिल्स फॉलोइंग अंडर दिस एच ऑफ द रूल व्हिच आर क्लासिफाइड बाय द कमिटी ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशंस आर कैटेगरी ए। इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी ए कर दिया, ठीक है। शैल हैव प्रेसिडेंस ओवर बिल्स क्लासिफाइड एज कैटेगरी बी एंड दैट द रिलेटिव प्रेसिडेंट ऑफ बिल्स फॉलोइंग अंडर ईच ऑफ द कैटेगरी शैल बी डिटरमाइंड बाय बैलेट सेपरेटली, ठीक है। प्रोवाइड फर्दर बिल फॉलोइंग अंडर द एच व्हिच आर classified by the committee on private member bills and resolutions as category A have प्रेसिडेंस होगा, ठीक है। इसमें नो फर्दर मोशन हैज बीन मेड और कैरिड, उसमें भी आपका बैलेट के द्वारा ही होगा। प्रोवाइड फर्दर वेयर द कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड क्लासिफाइड द बिल्स फॉलोइंग अंडर दिस एच एज कैटेगरी एंड द नंबर इज 20 और मोर बैलेट ऑफ कैटेगरी बी नॉट बी हेल्ड। जहाँ पर जो ए कैटेगरी है, जो है कैटेगरी ए जो है वहाँ पर 20 और मोर है, तो उस केस में इसमें क्या होगा, बैलेट जो है ऑफ कैटेगरी बी मे नॉट बी हेल्ड, वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोवाइड फर्दर दैट वेयर द कमिटी हैज नॉट क्लासिफाइड द बिल्स फॉलिंग अंडर एच एस कैटेगरी एंड कैटेगरी द ऑर्डर इन्वेस्टन on the list of business shall be determined by the ballot in accordance with such स्पीकर में गिव, ठीक है। और जहाँ पर जो है आपका कैटेगरी ए और कैटेगरी बी हैज नॉट क्लासिफाइड as category B, so the order in which the cell will be put down in the list of business shall be then it shall be determined by ballot, okay, in accordance with direction of the speakers. The speaker may by special order to be announced in the house make such variations in the relative precedence one as the speaker may consider necessary। तो किसी टाइम पर भी जो है speaker जो है may special order in the house make such variations, ठीक है। वेरिएशन कर सकते हैं। आप बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस, a ballot of names of members desiring to move a resolution shall be held in accordance with the orders made by the speaker on such day as the speaker may direct, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, अब ये रेजोल्यूशन और मोशन में क्या फ़र्क है देख लेते हैं एक बार। रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट, as far as in the will of the house on matters of general public interest, okay? Resolution is a written motion adopted by a deliberative body, the substance of can be anything that can normally be the motion, okay। क्या होता है बेसिकली, दैट्स अ रिटन मोशन, adopted by a deliberative body, the substance of the resolution can be anything that can normally be proposed as a motion. What is the meaning of it? The motion refers to a proposal that is placed before the meeting for the purpose of discussion passed. Turns out shows that the motion is passed, turns out the resolution बन जाता है, ठीक है। उस जनरल ओपिनियन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्पीकर जो है स्पीकर में बाय स्पेशल ऑर्डर टू बी अनाउंस इन द हाउस एक सच वेरिएशन कर सकते हैं। द प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से प्राइवेट प्रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस की बात करें, वो मोशन की बात थी। पहला टॉपिक है ना आपका, वो था आपका मेंबर बिल्स के रिगार्डिंग था, प्रेसिडेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स। अभी जो आ रहा है ये रेजोल्यूशन के बारे में है, ठीक है। क्या बोलता है, अ बैलेट ऑफ नेम्स of members desiring to move a resolution should be held in accordance with the orders made by speaker on such day as the speaker may direct, ठीक है। तो बैलेट ऑफ नेम्स ऑफ members, बैलेट ऑफ नेम desiring to move a resolution will be held in accordance with the orders by the speaker such day में डायरेक्ट, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट आपका प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ डे, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ डे,
The private members business set down for the day allotted for that class of business. Not this minute. Private members business outstanding at end of day. मान लीजिए कोई भी जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस है आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द डे उसके उसके उसमें क्या करेंगे प्राइवेट मेंबर बिजनेस सेट डाउन फॉर द डे फॉर दैट क्लास ऑफ बिजनेस एंड नॉट डिस्पोज ऑफ ऑन दैट डे shall not be set down for any subsequent day. Okay, shall not be down for any subsequent day unless it has gained priority at the ballot held with reference to that day. ठीक है, unless it has gained priority at ballot held with reference to that day. ठीक है, shall not be set down for any subsequent day. जब तक किसी सब्सिक्वेंट डे पर नहीं हो जाएगा तब तक अनलेस इट हैज गेन प्रायोरिटी एट द बैलेट हेल्ड विद रेफरेंस टू दैट डे. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल नंबर 27-28. Okay, such business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted business of that class and the president all over and then set down for that day. ठीक है, provide the note with and contained in rule number 27. जितने भी जो बिल वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, तो बोलता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन रूल 27, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन या बिल के रिगार्डिंग एनी सच बिजनेस विच इज अंडर डिस्कशन एट द एंड ऑफ द डे शैल बी सेट डाउन फॉर द नेक्स्ट डे अलॉटेड प्रोवाइडेड दैट नथिंग, मतलब इसके बावजूद जो है जो कुछ भी चाहे कुछ भी दे रखा हो 27-28 में कोई भी बिजनेस जो है विच इज अंडर डिस्कशन एट एंड ऑफ दैट डे shall be set down for the next day allotted to business of that class and shall have precedence all over. ठीक है, कह रहा है unless it is gained property. सिर्फ इसके अंदर भी कंडीशन है डिस्कशन बिजनेस इज जो कि अंडर डिस्कशन है एट द एंड ऑफ द डे अंडर अगर वो अंडर डिस्कशन है. ठीक है, and the day shall be set down for next day allotted to the business that class and shall have precedence set down for that day. क्या है उसके प्रेसिडेंस होगी है प्रेसिडेंस. बोलता है रिजम्पशन ऑफ एडजर्न डिबेट और प्राइवेट मेंबर बिल्स और रेजोल्यूशन. उसके इसमें क्या होगा रिजम्पशन ऑफ एडजर्न डिबेट. बोलता है व्हेन अ मोशन बीइंग कैरिड द डिबेट ऑन अ प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन इज एडजर्न टू द नेक्स्ट डे. ठीक है, अच्छा ऑफ एडजर्न डिबेट the next in the same or the next session it will not be set down for further discussion and it is gain popularity. ठीक है, it shall not set down for the discussion priority at the ballot and the debate on a private member bill or resolution is adjourned sine die. अगर उसको adjourned sine die कर देते हैं, ठीक है, without any future date and if the member in charge of the bill as the case may be or the resolution proceed with bill resolution of the bill may give notice पर है or the resolution bill may give a notice for resolution of the adjourned debate to such notice the president. लिस्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, क्या क्या हमारे लिस्ट ऑफ बिजनेस है. लिस्ट ऑफ बिजनेस का मतलब लिस्ट ऑफ बिजनेस इज द डे शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल. किसके द्वारा प्रिपेयर की जाएंगे दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल एंड द कॉपी देयरऑफ शैल बी अवेलेबल फॉर द यूज save as otherwise provided in these rules. No business not included in the list of business day shall be transacted at any sitting without the permission. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नो बिजनेस business the list of business for the day shall be transacted at sitting. किसी भी sitting में नहीं होगा without the permission. Without the permission. In these rules, no business requiring notice shall be set down for a day earlier than the day after that, which on which the period of notice necessary expires. Rules, कोई भी business जो है that requiring notice shall be set down for a day. अगर कोई भी business है ऐसा कोई business है that require notice कि उसको notice देना पड़ता है, ठीक है, shall be set down for a day earlier than the day. business कोई भी है वो business requiring
earlier than the day after that which is the period of notice जो है, तो जितना आप जो है कुछ भी करके, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि आपको नोटिस देना पड़ता है, 3 दिन का नोटिस है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि 3 दिन से पहले हो जाए, ठीक है। कहना चाह रहे हैं नो बिजनेस जो है रिक्वायरिंग नोटिस shall be set down for a day earlier than the day after that on which the period of notice necessary, unless the speaker otherwise directs not more than 3 resolutions in addition to any resolution pending under seal shall be set down in the list of which for any day allotted in, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन, कितने रेजोल्यूशन आ गए आपके पास, 3 रेजोल्यूशन, ठीक है, इन एडिशन टू एनी रेजोल्यूशन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर रूल्स, ये आपका क्लियर हो गया है इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 12 है आपका, एंड सॉरी नॉट 12, चैप्टर नंबर 7 है आपका, क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं इसमें से, कि थोड़ा सा इसको एग्जॉस्टिवली आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। बोलने क्वेश्चंस क्या क्या बोलते हैं, अनलेस द स्पीकर अदरवाइज एट द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग शैल बी अवेलेबल फॉर द आस्किंग एंड आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन। तो पहला ही जो घंटा है उसको क्या बोलते हैं आपको, दैट इज क्वेश्चन आवर, वो क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। द स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट, unless otherwise directs the first hour of every sitting shall be available for asking or answering of questions। तो फर्स्ट आवर की बात हो गई है, ठीक है। ऑफ एवरी सिटिंग, ठीक है, रेजोल्यूशन, ठीक है। अनलेस द स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट्स, ठीक है, नोट लेस देन 15 क्लियर डेज नोटिस ऑफ क्वेश्चन शैल बी गिवन। पीरियड ऑफ नोटिस क्या है इसका, क्वेश्चन आवर्स का जो पीरियड ऑफ नोटिस क्या है क्वेश्चंस के लिए, अनलेस द स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट्स नोट लेस देन 15 क्लियर डेज शैल बी गिवन। कम से कम नोट लेस देन कह रहे हैं, नोट लेस देन 15 क्लियर डेज, 15 क्लियर दिन होने चाहिए, ठीक है, आपके इसके लिए क्लियर डेज फॉर नोटिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्म ऑफ नोटिस, नोटिस ऑफ क्वेश्चन शैल बी गिवन इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी जनरल एंड शैल स्पेसिफाई, ठीक है, आपको क्या करना है, राइटिंग में देना है द टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, की टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का, ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर टू होम द क्वेश्चन इज एड्रेस, ठीक है, इज एड्रेस, उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन देना है आपने, द डेट ऑन विच द आंसर द क्वेश्चन इज डिजायर्ड, पर्टिकुलर डेट पे आप डिजायर कर रहे हैं इस तरीके से आंसर, the order of preference, if any, for its being placed on the list of questions where a member tables more than one notice of questions for the same day। कोई order of preference देना चाह रहे हैं आप, if any, for its being placed on the list of questions where member जो है tables more than one notice of, okay, यहाँ पर कहाँ पर more than one notice अगर देते हैं, ठीक है, where a notice is signed by more than one member it shall be deemed to have been given by the first signatory only। where a notice is signed by more than one member, कहीं पर अगर मान लीजिए कोई नोटिस है, कोई भी एक नोटिस है, इफ इट इज साइंड बाय मोर देन वन मेंबर इट शैल बी deemed to have been given the, then it shall be deemed to have been given by the first signatory only। deemed माना जाएगा, that is it given by the first, मतलब आप कितने भी साइन कर लो उस पर, एक फर्स्ट जिन्होंने साइन किया उस उनका माना जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नोटिस ऑफ एडमिटेड क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स। अब नोटिस देना है उनको जो भी एडमिट हो गए क्वेश्चंस टू, unless the speaker otherwise directs, no question shall be placed at the list of questions for answer until 5 days have expired from the day when notice of such question was given by the Secretary General to the minister to whom it was addressed। Okay? सबसे पहले आपको नोटिस मिल गया आपको कि कम से कम आपके पास 15 क्लियर डेज होने चाहिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट आवर के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो भी दो साइन करते हैं तो जो पहले साइन करेगा उन्हीं के नाम पे वो जो है नोटिस माना जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सिग्नेचर के थ्रू माना जाएगा। अनलेस द स्पीकर अदर डायरेक्ट नो क्वेश्चन शैल बी प्लेस्ड एट ऑन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर आंसर अंटिल 5 days, क्या बोलता है, अंटिल 5 days हैव एक्सपायर्ड
ठीक है, फ्रॉम द डे व्हेन नोटिस ऑफ सच क्वेश्चन वाज गिवन बाय द सेक्रेटरी जनरल टू द मिनिस्टर whom it was addressed। तो मतलब कम से कम 5 दिन लगेंगे उनको, 5 days का टाइम लगेगा। ठीक है, एक्सपायर्ड वो भी आफ्टर 5 days। ठीक है, व्हेन नोटिस ऑफ सच क्वेश्चन वाज गिवन, तो उसका भी जो नोटिस है ना, वाज गिवन बाय द सेक्रेटरी जनरल टू दैट मिनिस्टर। ठीक है, तो देने के बाद फिर बोलते हैं नोटिस ऑफ एडमिट क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स। नोटिस यहाँ पे ये देखिए आप, इज नोटिस ऑफ एडमिट क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स, तो उसको भी जो है आपको कम से कम क्लियर 5 days का टाइम देना पड़ेगा। देन बात आती है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन में हम बहुत बार ये कंफ्यूज होते हैं, मुझे इवन अभी भी कंफ्यूजन है, हालांकि मैं इसको काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। बट इसमें कंफ्यूजन रहती है कि स्टार्ड क्वेश्चन मतलब रिटन में या अनस्टार्ड रिटन होता है। स्टार्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से ओरल होता है, ये देख लेते हैं। अ मेंबर हु डिजायर्स एन ओरल आंसर टू वंस क्वेश्चन शैल डिस्टिंग्विश इट बाय एन एस्टेरिस्क। ठीक है, क्या है यहाँ पर, डिजायर्स एन ओरल आंसर, जिसको ओरल आंसर चाहिए। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए ओरल आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कई बार इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, अ मेंबर हु डिजायर्स एन ओरल आंसर टू वंस क्वेश्चन शैल डिस्टिंग्विश इन एस्टेरिस्क। ठीक, द मेंबर डज नॉट डिस्टिंग्विश बाय एन एस्टेरिस्क द रिटन आंसर। ठीक है, अगर आप इसमें तो ये ऑटोमेटिकली जो है कहीं दो लिस्ट ऑफ आंसर की रहेगा आंसर। ठीक है, दूसरा बोलता है लिमिट ऑफ नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चंस, कि आप जो है स्टार्ट क्वेश्चंस जो है वो उसकी कुछ लिमिट है कि आप इतने ही क्वेश्चन, देन बोलते हैं नोट मोर देन वन डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्टेरिस्क द सेम मेंबर एंड नोट मोर देन 20 क्वेश्चंस। देखिए, एक मेंबर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा आप, वन क्वेश्चन है, और बाय द सेम मेंबर and not more than 20 questions all shall be placed on the list of question for all answer on one day, on any one day। ठीक है, यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, वन क्वेश्चन पर मेंबर, और मैक्सिमम जो है 20 क्वेश्चंस पर डे। Provide that when a question is postponed or transferred from one list of questions for all answer to another, more than one question stand in the name of member। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रहता है या ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन लिस्ट ऑफ फॉर आंसर, more than one question stand one member को हो सकता है, and the total number of question may by such unless the speaker otherwise directs, where a member has given more than one notice of questions by an estimate okay, the member's question answer shall order indicate the member by the member and no such order is indicated। ठीक है, unless the speaker otherwise directs। ठीक है, where a member has given more than, यहाँ पर भी मेंबर है, एक मेंबर है जिन्होंने he has given more than notice of questions distinct by asterisk for the same day, then the members question for the oral answer shall be selected किया जाएगा in the order indicated by the member। ठीक है, एंड इफ नो सच ऑर्डर, अगर मान लीजिए कहाँ पर है जहाँ पर ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर नहीं है, oral answer देन किस किस में होगा आपका, फिर हो जाएगा ऑर्डर इन विच नोटिस आर रिसीव्ड पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है रोटेशनल अलॉटमेंट ऑफ डेज फॉर क्वेश्चंस, किस तरीके से जो है अलॉटमेंट होगी, allotment of days for questions। तो बोलता है the time available for answering questions shall be allotted on different days in rotation for answering the question relating to time available for answering questions shall be allotted on different days in rotation for the answering of questions your ministry as a speaker may from time to time provide, and on each such day unless the speaker with the consent of ministry concerned otherwise that only questions relating to the ministry or ministry from which time has been allotted on that day shall be placed at the list of questions for oral answers। ठीक है,
Here you go. Okay, I would like to take a break of 5 minutes, please.
Okay, so we were at like rotational allotment of days for questions. Rotational allotment होगी, ठीक है, rotation basis पे, मतलब the time available for answering questions, ठीक है, जो भी टाइम अवेलेबल होगा फॉर आंसरिंग क्वेश्चन shall be allotted on different days, वो जो है अलॉट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, इन रोटेशन, इन रोटेशन ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच मिनिस्ट्री। अगर मान लीजिए एक मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्रीज से जो क्वेश्चन रिलेट कर रहा है तो वो रोटेशनल बेसिस पे होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सारे क्वेश्चन पूछ, ठीक है। द टाइम अवेलेबल फॉर आंसरिंग क्वेश्चन शैल बी अलॉटेड ऑन डिफरेंट डेज इन रोटेशन for the answering of questions relating to such ministry or ministries as a speaker may from the time to time provide, and on each such day, unless the speaker with the consent of the ministry concerned otherwise directs, only questions relating to ministry or ministries for which has been allotted on that day shall be placed on the list of questions for oral answers, ठीक है। तो ये रोटेशनल बेसिस पे आंसर होंगे। अनस्टार्ड क्वेश्चंस क्या बोलते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्टार्ड वन जैसे हमारा स्टार्ट है, में आपको ओरली आपको जवाब देना पड़ता है। सिमिलरली अनस्टार्ड क्वेश्चंस को आपको राइटिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। So if a question is not distinguished by an asterisk, or if a question placed on the list of questions for oral answer on any day is not called within the time available for answering questions, that is that day, a written answer to such question shall be deemed to have been laid on the table at the end of the question hour। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बोलते हैं किसी भी क्वेश्चन, इफ अ क्वेश्चन इज नॉट डिस्टिंग बाय एन एस्ट्रिक, कोई भी अगर उस पर एस्ट्रिक नहीं लगा है, ठीक है, अगर उस पर एस्ट्रिक, दैट मींस इट इज नॉट अ स्टार्ट क्वेश्चन, तो ओरल आंसर तो होगा नहीं। और इफ अ क्वेश्चन प्लेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर ओरल आंसर, अगर मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है जो कि ओरल आंसर के लिए दिया गया है, ठीक है, ऑन एनी डे, इज नॉट कॉल्ड फॉर आंसर विद इन द टाइम अवेलेबल, अगर उसको नहीं बुलाया गया, ठीक है, तो मान लीजिए टाइम नहीं मिल पाया या इस तरीके से कुछ लगा लीजिए आप क्वेश्चन, या तो वो क्वेश्चन जो है एस्ट्रिक मार्क नहीं है, या फिर इफ और क्वेश्चन प्लेस्ड ऑन द लिस्ट on the or for oral answers, okay, on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day। मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा चर्चा हो गई, ठीक है, और उसके लिए जो है ओरल आंसर जो है नहीं दे पाए, इज नॉट कॉल्ड फॉर आंसर विद इन द टाइम अवेलेबल, ठीक है। तो रिटर्न आंसर, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न आंसर जो है अपने आप दिया जाएगा, रिटर्न आंसर सच क्वेश्चन कैल बी डीम टू हैव बीन लेड ऑन टेबल, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको दे देना है एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आर, ठीक है, क्वेश्चन आर के अंत में। as soon as the questions for oral answer have been disposed of, as the case may be, by the minister to whom the question is addressed, okay, a written answer to such question shall be deemed to have been laid on the table at the end of the question hour, or as soon as the questions for oral answer have been disposed of, as the case may be, by the minister to whom the question is, okay। ये आप ये ध्यान रखेंगे इसको। कोई भी जो स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन है अगर, या फिर इवन कोई स्टार्ड क्वेश्चन भी है, तो अनस्टार्ड का मतलब उन्होंने जिससे एस्टेट नहीं लगा रखा, या फिर कोई भी क्वेश्चन है कि आपने जिसका आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे ओरल आंसर, लेकिन जो टाइम उन्होंने अलॉट किया था आंसर अगर नहीं दे पाए गए तो वो ऑटोमेटिक आपको स्टार क्वेश्चन स्टार्ट उसको करके रिटर्न रिप्लाई उसका दे देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देर इज नो क्वेश्चन आर गोइंग टू द कैंसिलेशन ऑफ, मान लीजिए कोई कैंसिल हो गई, अर्जेंटमेंट हो गई विदाउट ट्रांजेक्शन, the questions, the answers to questions included in the list of questions of oral as well as written answers shall be deemed to have been laid on the table by the minister or addressed at the next sitting of the house and after the question hour and form part of the day। आपको क्या करना है, रिटर्न आंसर दे देना है इसमें। मान लीजिए किसी भी डे देर इज नो क्वेश्चन आर, अगर मान लीजिए इफ देर इज नो क्वेश्चन आर ओइंग टू द कैंसिलेशन ऑफ सिटिंग हो गई, एडजर्नमेंट हो गया विदाउट ट्रांजेक्शन बिजनेस, the question, the answers to questions included in the list for questions for oral, तो आंसर्स जो हैं फॉर ओरल एज वेल एज रिटन आंसर के जो shall be deemed to have been laid on, तो क्या हो जाएगा, that shall be deemed to have been laid on the table, ठीक है, by the ministers whom such question are addressed by the next sitting, at the next sitting, okay, at the at the next sitting of the house after the question hour and form part of that proceeding, question and that form the part of that proceeding of that day, ठीक है।
बोलता है, इससे अगला बोलता है इफ द क्वेश्चन आवर ऑन एनी डे इज डिस्पेंस्ड विद, मान लीजिए कोई भी जो क्वेश्चन डिस्पेंस विद कर दिया जाता है फॉर एनी रीजन, द आंसर्स टू क्वेश्चन of question oral as well as written answers for that day shall be deemed to have been learned by self part of डिस्पेंस विद कर दिया, मतलब डिस्पेंस विद फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से उसको डिस्पेंस कर दिया। डिस्पेंस विद मतलब करना होता है डिस्पेंस, मतलब इस तरीके से गेट रिड ऑफ, है ना, स्टॉप यूजिंग। ठीक है, तो बोलता है किसी भी क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन आवर ऑन एनी डे इज डिस्पेंस्ड विद, अगर किसी भी क्वेश्चन को जो डिस्पेंस्ड विद कर दिया, ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन आर इज डिस्पेंस विद कर दिया, ठीक है, फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, ठीक है। The answers to question including the list of question for all as written answers, तो for तो जो list of questions जो है ना आपकी, तो list of questions for oral as well as written answer जो है for that day shall be deemed have been laid on the table by the ministers to address and shall form part of the, तो उस दिन आपने रख देना है और वो part of the proceedings बन जाएगा, provided if the house does not continue with its sitting after dispensing with our answers to question answer for that day shall be available in the नेक्स्ट सेटिंग, ठीक है। तो मान लीजिए आपने जो है हाउस हाउस डज नॉट कंटिन्यू, हाउस जो है डज नॉट कंटिन्यू इट्स सेटिंग फेंसिंग विद, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, फिर माना जाएगा the answers to question list of questions for oral as well as written answer for that day shall be deemed to have been laid on the table after the question are at the next sitting of the house and shall part of the proceeding that day. Further provide that if the question are is interrupted, तो मान लीजिए फर्दर जो क्वेश्चन इंटरप्ट हो गया आफ्टर हैविंग टेकन अप द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर ओरल आंसर एंड द लिस्ट is partly disposed of and sitting continues, answers to remaining question the list of oral answer shall be deemed to have been laid on the table after 12 o'clock and form part of the proceedings of the day, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपका इंटरप्ट हो गया, ठीक है, और हैविंग टेकन अप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड द लिस्ट जो है ना पार्टली डिस्पोज की गई, ठीक है, एंड द सिटिंग कंटिन्यूज, आंसर्स टू रिमेनिंग क्वेश्चन जो है जो भी आपके आंसर्स होंगे ना रिमेनिंग आंसर्स टू द लिस्ट ऑफ deemed to have been laid on the table after 12 o'clock from part of the in the last sitting of a session is cancelled, अगर मान लीजिए लास्ट सिटिंग है क्या सेशन इज कैंसिल द क्वेश्चन इन द लिस्ट फॉर आंसर फॉर दैट डे शैल लैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये आपकी जो सिटिंग है ना द लास्ट सिटिंग, एक सेशन की जो है लास्ट सिटिंग इज कैंसिल, लास्ट सिटिंग कैंसिल हो गई, ठीक है, द क्वेश्चन इन द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिटन आंसर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ओरल रिटन आंसर एंड लैप्स लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बोलते हैं क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, अब कुछ प्राइवेट मेंबर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। बोलता है अ क्वेश्चन में बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर प्रोवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन इट्स टू सम बिल रेजोल्यूशन और अदर मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस हाउस फॉर विच दैट मैटर इज रिस्पॉन्सिबल, देखिए कोई भी एक क्वेश्चन जो कि एड्रेस किया गया है किसी भी प्राइवेट मेंबर को, प्रोवाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू सम बिल, वो उन बिल से जो है रिलेट होना चाहिए, रेजोल्यूशन और अदर मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर व्हिच दैट मैटर दिस मेंबर इज रिस्पांसिबल, आप उन्हीं से पूछ क्वेश्चन पूछेंगे जिनका मान लीजिए उन्होंने कोई अपने तरफ से कोई बिल चलाया है, कोई बिल इनिशिएट किया है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है उससे रिलेट होगा, ठीक है, एंड द प्रोसीजर इन द रिगार्ड टू सच क्वेश्चन एज फार एज मे बी सेव एंड द प्रोविजन इन द मिनिस्टर स्पीकर में कंसिडर मिनिस्टर कन्वीनियंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है सबसे पहले क्वेश्चन टू तो आप एड्रेस कर सकते हैं यस टू अ प्राइवेट मेंबर बिल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन लेट्स टू सेम बिल, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, लेट्स टू सम बिल रेजोल्यूशन और अदर मैटर connected with the business of the hours for which the
ठीक है, और वो प्रोसीजर क्या होगा, सेम होगा जैसे कि केस ऑफ क्वेश्चन एड्रेस टू मिनिस्टर, जैसे मिनिस्टर को एड्रेस करते हैं वैसे ही होगा सेम। एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को एडमिसिबल कैसे कर सकते हैं आप, बोलते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 2, पहले ही बोलता है टू रूल। अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन मैटर ऑफ पब्लिक विद इन द सेम कॉग्निजेंस ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन क्या 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 आपको, दैट मीन्स अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, अभी आप क्वेश्चन पूछ क्वेश्चन जो है मे बी आस्क्ड फॉर द on a matter of public importance within special cognizance of the minister to it is addressed with this within the, क्या कह रहे हैं, within the special cognizance मतलब डिटेल नॉलेज अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, तो नॉलेज होगी उन्हीं से तो पूछेंगे ना। लास्ट पब्लिक इन द स्पेशल कॉग्निजेंस जिन मिनिस्टर के प्रीव्यू में वो चीज आ रही है उन आपने वो पूछा। ठीक है, टू whom it is addressed, the right to ask a question is governed by the following conditions। आप कहते हैं कि भाई ये तो मेरा राइट है, ठीक है, माई राइट टू आस्क क्वेश्चन, दैट इज गवर्न बाय कुछ कंडीशंस है, उसके लिए क्या क्या है, इट शैल बी क्लियरली एंड प्रिसाइजली एक्सप्रेस्ड एंड शैल नॉट बी टू जनरली केपेबल ऑफ एनी आंसर ऑफ लीडिंग। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, शैल नॉट टू जनरल इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक आंसर। ठीक है, इट शैल नॉट ब्रिंग इन एनी नेम और स्टेटमेंट नेसेसरी टू मेक एलिजिबल। ठीक है, will not bring in any name or statement not strictly necessary to make question intelligible। है, then बोलता है आपका if it contains a statement of member shall make oneself responsible for the accuracy। if it contains, अगर वो कोई भी एक statement the member shall oneself responsible, member responsible। है, फिर बोलता है अगर कोई स्टेटमेंट तो मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे इफ इट शैल नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स इन्फ्लुएंस तरह नहीं देना चाहिए, नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स इन्फ्लुएंस आयरनिकल एक्सप्रेशन epithets or defamatory statement, shall not ask for an expression of opinion, shall not ask for an for the solution of the abstract or legal question, shall not ask for the character, not ask for a character or conduct of that person, except that person, that person, the public, or not ordinary, but से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, shall not relate to a matter which is not primarily the government of state to a matter, not not concern of, not ask about proceeding in the committee or proceedings in the committee placed before the house, which have not been placed before the general court in the end shall not reflect character or conduct of any, can be only be channeled in a substantive mode। Okay, shall not make or imply substantive mode, but I am क्या होता है, सबसे पहले it shall not make or imply a change personal character by, shall not raise question policy cards to be dealt answer question, shall not shall not ask for trivial matter,
not ask for ये कुछ रूल है जो कि आप करें, बोलता है इट शैल नॉट आस्क फॉर सेट फोर्थ इन सेट फोर्थ डॉक्यूमेंट, shall not raise matter control control of bodies, raise matters control of bodies or family, shall not ask for adjudication, shall not relate to any matter which is not of, shall not refer discourtesy to a friendly foreign country, shall not seek about matters which are in their nature secret, not which are in their nature secret matter जो है, says composition of cabinet committee, cabinet discussions, advice given to the president, because there is a constitutional convention, there is no, shall not ordinarily ask for are under parliamentary. It should not ordinarily ask about matter pending before any statute or statutory authority, forming any judicial or quasi-judicial or any commission or court of inquiry appointed to inquire. It shall not ask pending before any tribunal, pending before statutory tribunal or statutory authority, कोई भी commission या फिर court of inquiry appointed to investigate matter, but may refer to matters procedure or may refer yeah, so these are the things that need to be kept in mind for asking. Yeah. बोलता है क्वेश्चंस ऑन मैटर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्वेश्चंस जो है ऑन मैटर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस between government and state government. In matters which are or have been the subject of correspondence between government of India and the government of state, no question shall be asked except as to matter of fact, and the answer shall be confined to a statement of fact. Okay? Matters which are or have been the subject of correspondence. Questions on matters of correspondence between government of India and state government. तो इस केस में क्या करना है आपने? The questions on matter of correspondence between, ठीक है, between the government of India and state government. So the in matter which are or have been the subject of no questions shall be asked except as to matter of fact, except as a matter of fact, and the answer shall be statement of, okay. Then speaker to decide as admissibility. अब कौन इसको डिसाइड करेंगे? डिसाइड करेंगे इनकी एडमिसिबिलिटी. अच्छा एक बार बताइए यहाँ पर, यस आगे है हमारे, जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताते हमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अनस्टार्ट जो है कितने, हाँ?
चलिए, पर ये पूरा यही इसी से रिलेटेड है, तो बोलता है स्पीकर टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी जो है, इनको भी स्पीकर जो है डिसाइड करेंगे इनकी एडमिसिबिलिटी को भी। द स्पीकर the speaker shall decide whether question or a part thereof or is not admissible under these rules, may disallow any question or a part thereof. In the opinion of the speaker, it is an abuse of right of questioning or is calculated to observe affect the speaker of the house or these rules. Speaker जो है to decide this admissibility. Okay. Subject to the provision of rule 38. क्या कहता है आपका? That is rotational allotment of this. ठीक है. The subject बोलता है subject to the mayor. Made add that a question be placed on the list of questions for answer on a date later than that specified by a member in the notice of the speaker. The speaker that longer period is necessary to decide whether the question is or not divisible. Subject to the provisions of Rule 38 में ऐसे क्या लिखा है? Rule 38 कहता है आपका rotation of the time available for answering questions will be allotted on different days in rotation है ना? The time available है for answering questions shall be allotted on days rotation for answering of ministry. The speaker may on any day unless the speaker the concerned otherwise directs. Otherwise directs. Only question time has been noted that day based on the list of questions for answer. Okay. यहाँ पर यही बोलते हैं आपका that subject to the provision of the speaker जो है may that a question be for answer on date later than the question be raised uh, for answer date later than that specified by a member. The notice if the speaker is of the opinion that longer period is necessary to decide whether the question is or not admissible है नहीं है तो भी कर सकते हैं स्पीकर टू डिसाइड इफ a question to be at start or unstart अच्छा ये भी स्पीकर बताएंगे in the opinion of the speaker any question down for all answer is the written reply would be more appropriate the speaker may direct okay but the speaker if things fit may call upon the member who answer to state the reason for desiring an unknown that the written answer अगर चाहे उनसे if if things fit member has given notice call upon the member state in brief the reasons desiring and may direct be included then answer वाले ठीक है तो बोलता है लिमिट ऑफ नंबर ऑफ अनस्टार्ट क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं लिमिट क्या है इनकी यहाँ पर आपका the question have been admitted questions for answer shall be included in the list of questions for written answer in accordance with the okay? पहले यही बोला गया है कि the questions which have been admitted and not included तो क्वेश्चंस एडमिट कर लिए गए हैं ठीक है तो क्वेश्चंस जो हैं एडमिट हो गए हैं एंड नॉट इंक्लूडेड ऑफ क्वेश्चंस फॉर ओरल आंसर shall be included in the list of questions for written answer shall be included in answers ठीक है जो भी क्वेश्चंस जो है ओरली अगर उनका रिप्लाई नहीं है तो रिटर्न आंसर की लिस्ट में चले जाएंगे पहली बात दूसरा बोलता है इन दी बोलता है इन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर रिटर्न आंसर्स ऑन एनी डे not more than 4 questions by the same member if he or she has one question the list of question for an answer and not more than 5 questions that member has none in the list for an answer not
230 questions on call shall be included. Then, in the list of questions for written answer on any one day, not more than 4 questions by the same member. एक दिन पर and not more than 4 questions by the same member, or she has one question in the answer. कंडीशन लगा रहा है इसी में साथ साथ में that if he or she has one question of oral answer, okay, and not more than 5 questions that that member has done in the list of question answer, okay, and not more than 230 questions, all shall be included. Okay, okay. तो टोटल जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो 230 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके साथ में अगर the list of questions for written answer on any day, not more than one, not more than 4 questions by the same member. अगर कोई the list of written answer on and in the list of questions for written answer on one day, not more than 4 questions by the same member. If he or she has one question in the list, फिर किसी भी मेंबर का वन जो है ओरल क्वेश्चन है, इसमें 4 आपसे स्टार्ट पूछ सकते हैं और किसी मेंबर का अगर नील है और लोग 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो है 230 क्वेश्चन। ठीक है, और वहां पर कितना था आपका स्टार्ट क्वेश्चन सिर्फ 20 क्वेश्चन। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 क्वेश्चन। ठीक है, और 1 क्वेश्चन पर मेंबर। बोलते हैं प्रोवाइडेड दीज लिमिट्स में बी एक्सीडेड बाय द नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्रांसफर्ड और पोस्ट। और इसके अलावा जो है ये एक्सीड भी हो सकती है, may be exceeded, okay, by the number of questions transferred, postponed from one list of questions to another. So the product further the overall limit of questions in the list of questions for an answer on A may exceed the number of questions pertaining to state or states under present rule set to a maximum limit of 25. अच्छा, ये कहता है कि प्रोडक्ट फर्दर ओवरऑल लिमिट जो है एक्सीड वो भी एक्सीड कर सकती है, क्वेश्चन की जो लिमिट है ना वो भी एक्सीड कर सकती है by the number of questions pertaining to a state or states under present rule subject to a maximum 25 questions. तो यहाँ पर अगर by the number of questions pertaining to state or states under the president rule subject to maximum 25। तो पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट अब 25 क्वेश्चन। ठीक है, और बोलता है ऑर्डर इन विच स्टार्ट क्वेश्चन टू बी कॉल्ड, किस किस ऑर्डर में बोलना है। क्वेश्चन फॉर शैल बी कॉल्ड इन द ऑर्डर इन विच दे हैव स्टैंड ऑन द लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर stand on the list. Provide that a question not reached for oral answer may be answered after the end of the question hour. The permission of the speaker, the minister represents to the speaker that the question is one special public interest to which the minister desired to give a reply. दोनों दोनों कंडीशन हो
अगर कोई भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नॉट रीच फॉर ओरल आंसर, तो उसको क्या हो सकता है, इट मे बी आंसर्ड आफ्टर द आर विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर, कहते हैं उसके अंदर, if the minister represents to the speaker that the question is of special public interest and the minister जो है desired to give a reply, दोनों करेगा, reply and then represent the spirit of public special public interest, परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर, ठीक है। विड्रॉल और पोस्टपोनमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्या विड्रॉ कर सकते हैं आप? यस, एनी मेंबर बीइंग बाय नोटिस एनी टाइम बिफोर द सिटिंग ऑफ based on list withdraw the question, ठीक है, करना है बाय नोटिस बिफोर सिटिंग for which such member's question has been placed on the list, withdraw the question or postpone it on a later day, ठीक है, क्या specified in the notice on the later day to be specified in the notice, and on such day the question shall subject to the date be placed on the list after all questions have not been so postponed. To the provisions of Rule 38 be placed on the list after all questions which have not been so postponed. होता है a member जो है may by notice given time before the sitting for which such member's question has been on list, withdraw the question or postpone set a date to be specified in the notice. On such day the question shall to the date rotation वाला जो है be placed on the list after all questions have been which have not been so postponed, after all questions which have so postponed, provided that a postponed question should not be placed on the list until days have expired from the day when the postponed secretary, यहाँ पे 2 clear days होना चाहिए, अगर तो पोस्टपोन जो list till 2 clear days expired, when the notice of postpone has been received by the, okay? क्या करते हैं मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, हाउ एग्जैक्टली आस्क क्वेश्चन, what are the modes of, what are the modes of asking, so when the time, when the time for asking questions, when the time for asking question arises, the speaker shall call successively each member in name a question appears on the list, okay? So the mode of asking questions, किस तरीके से क्या क्या मोड्स है क्वेश्चन, so the when the time for asking question arises, जैसे ही वो टाइम आता है, the speaker shall successfully call successfully each member in whose पर जो है कॉल करते हैं, तो ठीक है, पर जो है कॉल करेंगे पर के नाम पे भी क्वेश्चन अपीयर होगा, member so called shall rise in own place and unless the member expresses ask, unless the member expresses to ask the question standing in the ask the question by reference to, if on one question be unless the member expresses unwillingness to ask the question standing in the ask the question by reference to its member, yeah, if on a question being called it not asked, member in whose name it stands is absent, the speaker may add the answer to be given, okay? When a question being called is not asked, it stands
absent, जो member है, the speaker may direct that the answer is to be given. Okay. Then next आता है supplementary question. ये पूछ रहे थे हम. No, supplementary. Yes, supplementary questions क्या होते हैं? Supplementary questions वो questions कि आप के साथ में सप्लीमेंट करते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस का भी रिप्लाई दे दीजिए. ठीक है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. The member in whose name a question is listed for an oral answer or any other member when called by the speaker may ask a supplementary question to further elucidating matter of fact regarding which an answer has been given. Okay, so supplementary question. The member in whose name a question is for oral answer. Okay, or any member when called by the speaker may ask a supplementary matter of fact regarding which an answer has been given. Supplementary shall be held out of order by the speaker. Okay, shall be held out by the speaker if the opinion of the speaker it does not arise from the main question or arise. Supplementary shall be held out order by the speaker. Hold out कर सकते हैं कब? अगर उनको लगता है if it does not arise from the main question. ठीक है, instead of asking gives information, it involves more than one separate issue, seeks confirmation or denial of an opinion, it infringes any of the rules regarding questions. ठीक है, तो होल्ड आउट कर सकते हैं. ठीक है, no discussion shall be permitted during the time for questions and 32 in respect of or any answer given to a question. ठीक है, रूल 32 कहते हैं जो है हमारा क्वेश्चन आर अनलेस द स्पीकर क्वेश्चन आर के अंदर. ठीक है, कहता है नो डिस्कशन शैल बी time for questions under rule 32 in respect of any question or given to a question. क्वेश्चन आर के अंदर जो रूल 32 है आपका के अंदर नो डिस्कशन अलाउड. ठीक है, बोलता है आंसर्स नोट टू रेफर टू प्रोसीडिंग्स इन काउंसिल. Answers not to refer to question and an answer to question in house and not refer to the answer to a question or proceedings in the council's current session. Okay, yeah, समझ में बोलता answers not to refer to proceedings councils. An answer to a question shall not refer to the answer to a question or proceedings council during a current session. Okay, देखिए एक सेकंड रुकिएगा. तो बोलते हैं आंसर्स नोट टू रेफर टू प्रोसीडिंग्स इन काउंसिल. ठीक है, an answer to question in the house shall not refer to answer to a question or proceedings in the council during the current. An answer to question in the house will not refer to answer to a question or proceeding in the council during the current session. समझिए इस क्वेश्चन को, आंसर्स नॉट टू रेफर टू प्रोसीडिंग काउंसिल्स. ठीक है, आंसर्स नॉट टू रेफर प्रोसीडिंग मतलब किसी भी आंसर को जब आप कोई भी किसी क्वेश्चन का एक आंसर दे रहे हो हाउस के अंदर तो वो रेफर नहीं करना चाहिए कि ये जो आंसर टू अ क्वेश्चन
और प्रोसीडिंग्स इन द काउंसिल ड्यूरिंग करंट कि जो है उस सेशन में ऐसा बताया गया, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो द लैप्स ऑफ पेंडिंग क्वेश्चंस रेफर टू मेंबर्स, लैप्स ऑफ पेंडिंग क्वेश्चंस, जो भी पेंडिंग क्वेश्चन वो लैप्स आते हैं, रेफर टू मेंबर बोलते हैं वेयर रेफरेंस इज मेड टू अ मेंबर इन connection with the number of questions and no reply is received or a reply received from such member is too late for the consideration of speaker and the placing of the question on the list of questions of uploaded, such notice shall be deemed to have lapsed. Okay, बोलते हैं वेयर रेफरेंस इज मेड टू अ मेंबर इन कनेक्शन नोटिस ऑफ अ क्वेश्चन, यहाँ पर आपने एक रेफरेंस दिया, बोलते हैं वेयर अ रेफरेंस इज मेड टू अ मेंबर, आपने कोई भी रेफरेंस दिया, रेफरेंस टू अ मेंबर in connection with the notice of a question or in connection with the notice of a question, ठीक है, in connection with the notice of a question, where a reference is made to a member in the connection with the notice of a question and no reply is received or reply received from such member is too late, और अगर वहां से आपको no reply is received or reply received is too late for consideration of the speaker, the placing of the question, if admitted on the list of question for number of dates, such placing of question reference made to a member in question with the notice of the question and no reply is received or reply is too late for the consider. Okay, the speaker and placing of the question. Okay, the list of questions upload dates. Okay, for the too late for the consideration of the speaker. तो है अगर आपने एक रेफरेंस दिया, रेफरेंस मेड टू अ मेंबर इन कनेक्शन विद द नोटिस ऑफ अ क्वेश्चन, आप किसी कोई भी नोटिस आप चला रहे हैं विद या फिर विद नोटिस ऑफ अ क्वेश्चन, with the notice of a question and no reply is received or reply received such member is too late, the consideration of the speaker and the placing of the question, if admitted on the list of questions appropriate date, the notice shall be deemed to have been lapsed, जो है shall be deemed to have lapsed. मुझे समझ में नहीं आया है इसका 52, दोबारा पूछते हैं, फिर रेफरेंस इज मेड टू अ मेंबर, हम जस्ट थोड़ा सा इसको स्पीड अप करना चाहेंगे बिकॉज थोड़ा स्पीड अप करना चाहेंगे इसको। बोलता है लैप्स ऑफ पेंडिंग क्वेश्चंस रेफर टू मेंबर, लैप्स ऑफ पेंडिंग क्वेश्चंस, पेंडिंग क्वेश्चन जो है रेफर टू लैप्स हो जाए, कहता कहता है वेयर वेयर अ रेफरेंस इज मेड टू अ मेंबर, जहाँ पर आपने एक रेफरेंस दिया किसी भी member को, ठीक है, इन कनेक्शन विद द नोटिस ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है, एंड नो रिप्लाई रिसीव्ड एंड रिप्लाई रिसीव्ड मेंबर इज टू लेट फॉर द रिप्लाई एंड दिस, अच्छा जहाँ पर आपने एक रेफरेंस दिया किसी मेंबर को जो आप एक क्वेश्चन जो है नोट रिगार्डिंग, ठीक है, और रिप्लाई वहाँ से जो है बहुत लेट रिसीव हुआ या फिर नहीं रिसीव हुआ, मेंबर और रेफर लेट हुआ, ठीक है, कंसिडरेशन स्पीकर एंड द प्लेसिंग ऑफ द क्वेश्चन इफ एडमिटेड, और वहाँ पर जो क्वेश्चन जो था ना वो एडमिट हो गया है ऑन द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अप्रोप्रिएट डेट, सच नोटिस जो है शैल बी डीम टू हैव लैप्स, तो वो लैप्स माना जाए, ठीक है। बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एडवांस पब्लिसिटी ऑफ आंसर्स, so answers to question poses to give in the house shall not be released for public till the answers have been given on the floor of the house, and the answer to question supposed to give in the house वो पहले से रिलीज नहीं कर, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, शॉर्ट नोटिस, क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कुछ क्वेश्चन है ना, दैट मे बी आस्क्ड विद नोटिस शॉर्टर देन 10 days, नोटिस शॉर्टर देन 10 क्लियर डेज एंड द स्पीकर कहाँ पर 10 days से शॉर्टर, 10 days if of the question is of urgent character and may direct that an inquiry may be made from the minister concerned if with reply and if so on what date, into a matter of public importance may be asked with and the speaker if of the opinion that question of urgent character
स्पीकर का ओपिनियन कैरेक्टर मे डायरेक्ट डायरेक्ट इंक्वायरी केस जो है इंक्वायरी इट टर्न reply. Okay. If the minister concerned agrees to reply, minister जो भी है ना, वो agree to reply, such question shall be answered on a day to be indicated by the minister. अगर वो agree है, then on a day indicated by the minister, जैसे वो indicate करेंगे, and shall be called immediately after the question have appeared on the list of have been displayed. Okay. उसके बाद कब आना चाहिए वो एकदम immediately called immediately after the question have been appeared on the list. If the minister is unable to answer the short notice, पर जो है वो is unable to answer short notice and speaker is of the opinion that the question house speaker made a first question as the first question of the list for the day on which it would be due for answer under rule 33. Provide that not more than one such question shall be called first priority on the list of question for one day. ठीक है, अगर unable to answer और speaker के opinion में लगता है that the question is of sufficient to the speaker may direct the question is may direct question be placed as the first question on the list of questions of the day on which it would be due. We place first question on the list of questions which it would be due for answer under rule 33. It may be provided not more than one such question be called priority list of one day. Okay. Where a notice of short notice question is signed by more than one member shall be deemed to have been signed by the first signatory only. Where two or more members give short notice questions on the subject on the same subject and one of the questions is acceptable for answer and names of not more than four members other than the whose name notice has been admitted as written member shall be shown against that admitted. Okay. बोलता है where two or more members जो है दो या दो से ज़्यादा जो है शॉर्ट नोटिस देते हैं सेम सब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इज शॉर्ट नोटिस then not more than four members other than whose notice has been and यहाँ पर जो एडमिट जो क्वेश्चन हो जाएगा ना जो भी क्वेश्चन एडमिट हुआ एडमिट क्वेश्चन को क्या होगा उसको सिर्फ 1+4 होगा के नाम पर एडमिट हुआ है +4 ठीक है. Provide that speaker may add that all notices be consolidated in a single notice if in the opinion of the speaker it is desirable to have a single self-contained question covering all important discussion and the minister shall then give reply to the consolidated question. सर जो है अपने तरफ से ऐड कर सकते that all the notices be consolidated into a single notice. ठीक है. Provide further in case of consolidated question names of not more than four members other than one whose name has been admitted as is shown in the question. Where a member desires an oral answer to a question at a short notice, such member shall briefly state the reason for asking the question with short notice. When no reasons have been assigned in the notice, the question will return to the member. ठीक है. अगर कोई भी एक मेंबर जो डिजायर करता है ओरल आंसर ठीक है एट अ शॉर्टर नोटिस ठीक है यू शुड ब्रीफली जो है स्टेट द रीजंस और जहाँ पर नो रीजंस हैव बीन असाइंड द क्वेश्चन बी रिटर्न टू द मेंबर को रिटर्न कर दिया जाएगा. The member who has been given notice of the question shall be in one's own seat to ask the question by reference
to its number on the list of questions when called by the speaker, and the minister concerned shall give a reply immediately. The member who has given notice of the question shall be in one's own seat to ask the question by reference to its number, by reference to its number on the list of questions when called by the speaker. The minister shall give a reply immediately. Okay. The provided that when a question is the name of in other respects, procedure for short notice same as a with modification make a procedure जो है ना procedure for short notice question as ordinary oral answers modification make error necessary or convenient, right. हमारा ये भी हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, तो इसका एक ओवरव्यू मिल गया है इस चीज़ के बारे में, राइट. विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.